Welcome to yet another episode of Bright Talks by Pachouli Aesthetics and Wellness, an initiative in public interest by Dr. Preeti Seth, founder and mentor for Pachouli Aesthetics and Wellness. And we are here with an eminent cancer specialist, oncologist, Dr. Abhishek Gulia from Jaypee Hospital. Namaskar, Doctor. Namaskar. Thank you for coming here. And we are discussing today about breast cancer awareness. Yes, a very crucial and prevalent topic these days. We all know October was the Breast Cancer Awareness Month, and this is a cancer that is reported in India that every 4 minutes a woman from rural and urban population suffers and detects cancer. So let's understand from Dr. Gulia how this can be prevented, what all we can take care of, and what are the measures that can be taken care so that this cancer spread can be controlled. So, Doctor, thank you for coming here. I am sure this live session is going to be very insightful for all our live audience. And I would first want to understand, is genetics playing an important role in it? Why this is spreading so much? So, first of all, thank you, Dr. Preeti and Dr. Divya and Pachouli for this wonderful initiative, which is highly warranted in these times because the incidence is really increasing, as said by Dr. Divya. And you'll be surprised to know that 1 in 25 women in her lifetime will have breast cancer. So this is quite alarming by those standards. And coming to the question proper, what's the role of genetics? Now, everybody thinks that there's common belief in the society that breast cancer is a genetical problem and hereditary or genetical link is always there in breast cancer. However, this is not true because only around 5 to 10% of the patients who have breast cancer, they have any family history of breast cancer. Apart from them, in the family, they do have other members who have breast cancer. So, around 95 to 90% of the patients are people who have never had a breast cancer patients in their family. So the link of breast cancer to genetics is pretty less. There are some genes like we call them BRCA1 and BRCA2 genes, which have a role in genetical linkage of breast cancer. And people who have it, in those people, it runs in the family. So we call them a high risk population. If somebody has a familial kind of association of breast cancer, we do test for these genes, and in the other females of that family, we have to be very alert, and we have some guidelines which we have to follow so that they don't suffer from this cancer. Thank you so much, Doctor. So we now know that it's not just the genetics, there can be other factors also. So we all are susceptible and we all have to take care. So before we proceed, I would want to request all the lovely audience to press that heart button and show us some love, shower us lots and lots of love. Please share and keep on showering your questions, which we will be taking at the end of the webinar. So Doctor, I have heard, and I'm sure many of our viewers also have heard, that black undergarments or black braziers also impose a risk for cancer. Is it true or is it just a myth? So this is a totally unfounded myth, and it's very, I find it very absurd actually. The belief and the basis of this myth in the society is that black color absorbs heat. And this heat will somehow cause changes in the breast which will induce breast cancer. This is all totally wrong. One can wear any color, any garment, that does not have any implication or any bearing on the incidence of breast cancer. So rest assured, you can go for whatever you like, you feel like. So that's so comforting. Now we can anyways pick for any color which we like, and there is no restriction at all, and there is no risk for breast cancer if you're wearing a black color. So doctor, at the time of menstrual cycle, somebody can feel tenderness in the breast. So is tenderness also a alarming sign? क्या ये एक टेंशन की बात है या एक कंसर्न है जो हम सबको ध्यान देना चाहिए? So this tenderness is nothing but the response of the breast tissue towards the cyclical hormone changes in a normal female. हर फीमेल में during the cycles एक changes होते हैं बॉडी में हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर भी वो हार्मोन्स काम करते हैं और उनमें कुछ बदलाव आते हैं जिस वजह से ये पेन होता है. इसको हम साइक्लिकल मैस्टैल्जिया और साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन कहते हैं
किसी किसी में ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, उस केस में हमें कुछ दवाइयाँ देनी होती हैं। किसी किसी में ये थोड़ा बहुत होता है, उस केस में हम सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या सिर्फ काउंसलिंग से काम चला लेते हैं। बट इन नो वे दिस साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन इज रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर। या फिर अगर मैं बिल्कुल और साफ शब्दों में कहूँ तो अगर किसी स्त्री को साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन होता है, पीरियड्स के साथ ब्रेस्ट पेन होता है, उस फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस एज कम्पेयर टू अदर फीमेल्स नहीं है। Wonderful. That's such an insightful thing, and it's such a relief to know that tenderness से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वरी करने की जरूरत नहीं है. Yes, definitely अगर आपको ये ज़्यादा बॉदर करी है, as doctor has said, there are symptomatic treatments that can be offered to you, but घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. So डॉक्टर, ऐसे क्या चेंजेस हैं ब्रेस्ट में जो हमें नोटिस करने चाहिए, जो इमीडिएटली वार्निंग साइन है, जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए? सो दिस अ कॉमन परसेप्शन, एक धारणा है समाज में कि ब्रेस्ट कैंसर यानी कि एक गांठ से शुरुआत होगी, और ज़्यादातर केसेस में ये सही भी है. ज़्यादातर केसेस में ब्रेस्ट कैंसर एक गांठ के रूप में शुरू होता है, विच इज़ यूजुअली अ पेनलेस लंप. पेनफुल गांठ आमतौर पे इन्फेक्शन की गांठ मानी जाती है, लेकिन न सिर्फ गांठ या कोई लंप, बल्कि ब्रेस्ट में किसी भी तरह के बदलाव ब्रेस्ट कैंसर का इशारा कर सकते हैं. आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्रेस्ट में सिर्फ निपल का अंदर चले जाना, या निपल से कोई डिस्चार्ज होना जो कि रेडिश कलर का हो सकता है, ग्रीनिश कलर का हो सकता है, या ब्रेस्ट की शेप चेंज हो जाना, या ब्रेस्ट की स्किन कलर या निपल में क्रस्टिंग का होना, एक छाला सा हो जाना, या ब्रेस्ट की स्किन कलर भी चेंज हो जाना भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है. कुछ केसेस में हम ब्रेस्ट में कुछ ना पाके बगल में एक गांठ को महसूस कर सकते हैं, वो भी ब्रेस्ट कैंसर का एक लक्षण हो सकता है. ये सारे ही बदलाव ब्रेस्ट कैंसर का इशारा कर सकते हैं. इसीलिए वी ऑलवेज स्ट्रेस अपॉन दैट एवरी वुमन शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट हर ब्रेस्ट्स फील लाइक. You should be aware of your body, so that if you find anything abnormal, if you find anything is amiss, that can be indication of something is wrong, and then you should visit a doctor. So everybody should be aware if there's any change which is unusual and you've not noticed this before, please consult your doctor so that they can guide you better and can understand if there is any concern or an alarming sign that you're experiencing. So thank you doctor for this insightful information. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि मैमोग्राफी जनरली 40 साल की उम्र के बाद ही प्रिस्क्राइब की जाती है, ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ 40 साल की उम्र के बाद ही हमको कैंसर के चांसेस हैं, या उससे पहले भी हमें वरी करने की ज़रूरत है? इस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है? सो देखिए, जहाँ तक मैमोग्राफी की बात है, मैमोग्राफी 2 कारणों से कराई जाती है. वन इज स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, यानी कि एक नॉर्मल फीमेल जिसमें कोई भी गांठ वगैरह नहीं महसूस हो रही है, उसमें हमने 40 साल के ऊपर हम बोलते हैं कि हर साल या आजकल के रिकमेंडेशंस के हिसाब से हर 2 साल में एक बार मैमोग्राफी करानी चाहिए, ये देखने के लिए कि कहीं कोई गांठ बन तो नहीं रही. कैंसर अगर बन रहा है तो उसको बहुत जल्दी, बहुत अर्ली स्टेज पर पकड़ने के लिए इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग मैमोग्राफी. ये 40 के बाद इसीलिए बताई जाती है क्योंकि बिफोर 40 there is a very less risk of people contracting breast cancer or having breast cancer. So इसीलिए 40 से कम, हम सब ऐसा नहीं कहते कि सभी फीमेल जो कि 15 साल में है या 20 साल की आयु है या 25 साल की आयु है सबको हर साल कराते रहना चाहिए. नो, द रियल रिस्क स्टार्ट्स एट 40. सो इसीलिए हमें 40 के बाद हम उसको बोलते हैं. दूसरा जो हम एक प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं मैमोग्राफी का, वो होता है कि डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी. मान लीजिए कि किसी ने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में कुछ महसूस किया, किसी लेडी ने, या किसी डॉक्टर ने कुछ महसूस किया कि शायद कोई गांठ है या गांठ जैसा लग रहा है, तब भी हम एक मैमोग्राफी कराते हैं. उस केस में हम उसकी एज नहीं देखते. हम 35 में भी करा सकते हैं, हम 37 में भी करा सकते हैं, हम 32 में भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमें उस गांठ के बारे में फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए. सो उस केस में हम उसकी एज को नहीं देखते हैं. हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो मेक अ पॉइंट दैट जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है उसमें 2 तरह के हमारे टिश्यूज होते हैं. वन इज फैट एंड वन इज ग्लैंडुलर टिश्यू. जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती जाती है, द ग्लैंडुलर टिश्यू रिसीड्स इन द क्वांटिटी एंड फैटी टिश्यू इंक्रीजेस. जब 40 से पहले इन यंग फीमेल्स द ग्लैंडुलर टिश्यू इज मोर. इन सच पेशेंट्स समटाइम द ब्रेस्ट इज सो फर्म एंड द ग्लैंडुलर टिश्यू इज सो मच कि हम अल्ट्रासाउंड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू मैमोग्राफी. सो 40 के नीचे हम एक तो स्क्रीनिंग नहीं बोलते, दूसरा अगर हमें कोई एबनॉर्मलिटी मिलती है तब हम मैमोग्राफी करने के लिए बोलते हैं, और तीसरा यंग ब्रेस्ट, फर्म ब्रेस्ट में विद मोर ग्लैंडुलर टिश्यू वी डू प्रेफर अल्ट्रासाउंड समटाइम्स देन मैमोग्राफी.
That's a wonderful thing to understand. So that means ऐसा नहीं है कि 40 से पहले आपको कैंसर नहीं हो सकता. अगर आपको कोई साइन एंड सिम्टम ऐसा नज़र आता है तो ज़रूर कंसल्ट करें, एंड अगर ज़रूरत होगी तो डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी जो भी एडवाइजेबल है वो सजेस्ट करेंगे. So for those who have just joined in, we are at Bright Talks by Pachouli Aesthetics and Wellness, and I'm your host Dr. Divya Agarwal, and we are talking to Dr. Abhishek Gulia, who is an eminent cancer specialist from Jaypee Hospital, and we are talking about breast cancer awareness. Yes. So please keep on showering your love in the form of questions, and tap the heart button so that we understand that you all are listening here. So doctor, the next question is benign and malignant में क्या difference है? क्या कोई treatment भी इससे change हो जाता है? क्या benign को हमें worry नहीं करना चाहिए, या सिर्फ malignant है वही बहुत ज़्यादा dangerous है? What is the link with the breast cancer and all this? देखिए, जैसा कि benign word का जो literal meaning है, benign is not aggressive. So benign tumors, like every tumor is not cancer. ट्यूमर की अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो गांठ, हर गांठ कैंसरस गांठ नहीं होती है. इनफैक्ट ज़्यादातर जो गांठें होती हैं ब्रेस्ट में, दे आर फाइब्रोएडेनोमास या सिस्ट्स, जो कि कैंसर नहीं होती हैं. जो गांठें कैंसर नहीं होती हैं उनको हम बिनाइन गांठ कह देते हैं, उनके लिए ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं होती है. ओनली दोज ट्यूमर्स और गांठ जो गांठ होती हैं, ओनली दोज विच हैव अ कैपेसिटी टू ग्रो अनकंट्रोलेबली and which have the capacity to spread to other organs are malignant, are called malignant or cancerous. So benign यानी non-cancerous and malignant यानी cancerous. And cancerous यानी जिनमें अपनी जगह पे ही फैलते रहने की क्षमता है, and वहाँ से कहीं और जाके भी जैसे लीवर या लंग्स में फैल जाने की क्षमता है. So इसीलिए malignant की ही हमें बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता है. benign में हमें इतनी चिंता की आवश्यकता नहीं होती. सो डॉक्टर, क्या डाइट भी रोल प्ले करती है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज करने में, एंड ऐसा क्या डाइट है जो इसका रिस्क जो है रिड्यूस कर सकता है? बेशक, आपने शुरू में हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें हमने जेनेटिक एसोसिएशन की बात की थी, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्यों आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है कैंसर. इनफैक्ट जेनेटिक एसोसिएशन तो बहुत एक छोटा सा फैक्टर है, लेकिन और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग डाइट, एल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, inactivity, lack of physical exercise, lack of fresh fruits and vegetables in the diet. ये सारे जो factors हैं, increased consumption of red meats, increased consumption of fats, obesity, ये सारे factors एक major role play करते हैं किसी भी society में, किसी भी population में breast cancer के risk को बढ़ाने में. So yes, diet does play a role, a very important role actually. सो एंटी ओबेसिटी मंथ भी चल रहा है, एंड जैसा कि डॉक्टर गुलिया ने बताया, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इनएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो प्लीज़ आप लोग सब अपनी अपनी लाइफस्टाइल पे ज़रूर ध्यान दें, बिकॉज अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी अपने आप को सेव करके बचा के चल सकते हैं. सो डॉक्टर, हार्मोनल फैक्टर्स जैसे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्या ये भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज करती हैं? देखिए, इसमें कुछ कन्फ्लिक्टिंग स्टडीज़ हैं. कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ता है, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि नहीं बढ़ता है. एंड बट आई सिंप्लीफाई इट फॉर यू. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है. इनफैक्ट अगर हम स्टडीज़ को देखें भी, जो भी कहती हैं कि बढ़ता है, उसमें भी बहुत माइनर, एक बहुत ही माइन्यूट चांस होता है कि थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है रिस्क, लेकिन उसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि यूट्रस कैंसर का रिस्क कम हो जाता है ओसीपीज खाने से, और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. कॉन्ट्रासेप्शन इन इटसेल्फ इज़ अ बेनिफिट. बहुत सारी फीमेल्स में मैस्टैल्जिया के लिए, पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए बहुत तरीके से यूज़ होती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द आंसर टू दिस वन कैन बी नो. कोई रिस्क नहीं बढ़ता है, ना ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से, जो करंटली प्रेवलेंट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज हैं, एंड जो लो डोज ओसीपीज आजकल जो प्रचलित हैं, उनसे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कोई ज़्यादा बढ़ता नहीं है. So that means आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. आपको अगर डॉक्टर ने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सजेस्ट की है तो आप उसको कंफर्टेबली कंज्यूम कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के. एंड और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स डेफिनेटली आपको कंज्यूम करनी चाहिए अगर आप
कॉन्ट्रासेप्शन करना चाहते हैं। सो बिकॉज जनरली हम लोग इसीलिए अवॉइड करते हैं कि हम लोगों को लगता है उससे कुछ बहुत ज़्यादा इंटरनली हार्मफुल चेंजेस हो जाएंगे एंड कुछ कैंसर हो जाएगा। So that is not true, and Dr. Gulia has rightly suggested that it is totally a myth, and we are here to debunk all the myths associated with common medical practices. So doctor, क्या कुछ ऐसे lesser known symptoms भी हैं जो लोग बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं एंड ध्यान ही नहीं देते हैं, अल्टीमेटली पता चलता है वो नो ये तो कैंसर का सिम्टम था। कोई बहुत माइन्यूट सिम्टम ऐसा जो आपकी प्रैक्टिस में कभी आया हो एंड इट वाज शॉकिंग फॉर यू आल्सो कि ये भी एक सिम्टम था कैंसर को बताने का? Well, symptoms तो as we already discussed के any change or any asymmetry, anything which is unusual in the breast can be a symptom of breast cancer. लेकिन the more important thing is कि as compared to the Western population, as compared to the European and the population in the US, हमारे breast cancer के जो survival rates हैं वो कम होते हैं। वो इसलिए कम होते हैं कि हमारे जो patients हमारे पास आते हैं बहुत सारे, इनफैक्ट ज़्यादातर पेशेंट्स उस स्टेज पे आते हैं जब ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी बढ़ चुका होता है। सो जितना जल्दी हम ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ेंगे उतना हमें उसका कम इलाज करना पड़ेगा। वी कैन स्किप अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी इफ वी कैच इट वेरी अर्ली एट अ स्टेज 1 रादर, और हम अगर उसको बहुत लेट पकड़ पाएंगे, जैसे हम ज़्यादातर, जैसा मैंने कहा कि स्टेज 3 में हमारे पास पेशेंट्स पहुँचते हैं, स्टेज 2 में पहुँचते हैं, कुछ तो स्टेज 4 में पहुँचते हैं, उन केसेस में उसको ठीक होने के चांसेस उतने ही कम होते चले जाते हैं। ओके, सो दैट मीन्स अर्ली डिटेक्शन इज द की, एंड आपको जैसे ही कोई अनयूजुअल सिम्टम पता चले आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। एंड अर्ली डिटेक्शन से डॉक्टर जिन्हें जैसे बताया आपको रेडिएशन से भी बच सकते हैं, आप कीमोथेरेपी से भी बच सकते हैं एंड इलाज काफ़ी ईजी हो जाता है। सो डॉक्टर, अभी आजकल क्या लेटेस्ट इनोवेशन है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन में? ऐसी क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं? प्लीज़ थोड़ा व्यूअर्स को आप बताएं। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे जो ज़रूरी एक चीज़ है उसको जल्दी पकड़ने के लिए इज़ अ रेगुलर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। आप खुद अपने आप को जाने, अपनी यू शुड नो हाउ योर बॉडी फील्स लाइक, हाउ योर ब्रेस्ट फील लाइक, एंड एनी एब्नॉर्मलिटी एज आई सेड, आपको उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। If you feel anything, then we have to confirm it with some tests. The routine tests which we discuss are ultrasound, mammography. किसी केस में अगर हमें अल्ट्रासाउंड मैमोग्राफी को फर्दर एक क्लैरिफिकेशन चाहिए तो we go for MRI of the breasts also. But as far as newer techniques are concerned, there is something which is known as 3D mammography. 3D mammography या tomosynthesis. It is a slightly advanced form of again a digital mammography जो इतना minute level पे भी cancers को पकड़ लेती है। So एक अच्छी mammography is good enough to detect cancer at a very minute level. Okay, so early detection के लिए self examination is the best thing as doctor has said, and definitely MRI भी है और new technologies जो डॉक्टर ने अभी हमें बताया वो भी आ चुकी हैं। So आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, and you all can avail all these advanced techniques anywhere in the hospitals. There are a lot of hospitals which are offering this, and if somebody needs guidance, Dr. Gulia is always there to throw some light on these advancements. So doctor, common misconceptions क्या हैं आजकल ट्रीटमेंट को लेके? क्या रेडिएशंस की वजह से आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं? कीमोथेरेपी के क्या आगे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं? ट्रीटमेंट को लेके भी लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डर बन जाता है कैंसर को लेके कि इलाज है पर वो इलाज ही आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेशंस देता है। सो आपका क्या कहना है सर? The most common misconception which has I don't know how many lives it has consumed, कितनी जानें इस मिसकंसेप्शन की वजह से चली गई हैं कि अगर हमने कैंसर को, कोई भी कैंसर फॉर दैट मैटर और ब्रेस्ट कैंसर इन स्पेसिफिक, अगर इसको हमने छेड़ दिया तो ये फैल जाएगा। वेल, कैंसर हम उसी गांठ को कहते हैं जिसमें बिना रुके बढ़ते रहने की और उस जगह से कहीं और फैल जाने की क्षमता होती है, वही गांठ कैंसर होती है। चाहे हम उसको छेड़ें, चाहे हम उसकी बायोप्सी करें या ना करें, वो कैंसर है। तभी तो वो गांठ कैंसर है क्योंकि उसमें वो फैल जाने की क्षमता है। बहुत सारी पेशेंट्स हमारे पास बहुत लेट इसलिए आती हैं कि हम बायोप्सी नहीं करवाएंगे क्योंकि बायोप्सी करवाने से ये फैल जाएगा। इस करके उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, उस करके उनका डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता और उनकी जान चली जाती है। सो बायोप्सी से या उसको छेड़ने से
कैंसर नहीं फैलता. दिस इज वन मिसकंसेप्शन which is very very important to be cleared off at this forum. Second, treatment के regarding conception. Lot of patients feel के radiation is very painful. Chemo is very painful. No, not at all. No. Radiation is very painless. It's just like this light falling on all of us. It's the same electromagnetic rays. In fact, जो हम सभी ने अपने जीवन में एक्सरे करवाया है कभी ना कभी, एक्सरेज में जो रेज यूज होती हैं वही सेम रेज रेडिएशन थेरेपी में यूज होती हैं. सो इट्स नॉट एट ऑल पेनफुल. सेकेंड, कीमोथेरेपी इज पेनफुल. नो, नॉट एट ऑल. अगेन, कीमोथेरेपी वो दवाइयाँ हैं जो कैंसर के लिए मैनकाइंड ने डेवलप करी हैं, ह्यूमंस ने डेवलप करी हैं, और वो ग्लूकोज में डाल के आमतौर पे दवाइयाँ खून के माध्यम से किसी भी इंसान को दी जाती हैं. इसमें पेन बिल्कुल नहीं होता. ऑल्दो आई मस्ट से कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, हर इलाज के साइड इफेक्ट्स होते हैं फॉर दैट मैटर. रेडिएशन के लोकल साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जहाँ भी हम रेडिएशन दे रहे हैं वहाँ की स्किन का कलर चेंज हो सकता है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा सोर थ्रोट हो सकता है. आजकल की जो रेडिएशन टेक्निक्स होती हैं उनमें और ज़्यादा साइड इफेक्ट्स अमूमन देखने को नहीं मिलते. कीमोथेरेपी से डिवाइडिंग सेल्स ऑफ द बॉडी पे इफेक्ट आता है, क्योंकि हमने उसको डिज़ाइन ही इस तरह किया है. हमने कीमोथेरेपी को बनाया ही इसीलिए कि वो डिवाइडिंग सेल्स को मारे. इसीलिए हमारे बॉडी में डिवाइडिंग सेल्स हैं, जैसे कि हमारे बाल जो कि डिवाइडिंग कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, हमारे नाखून, हमारे ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, हमारे इंटेस्टाइन के लाइनिंग सेल्स, इन सब पे कीमोथेरेपी का इफेक्ट आता है. लेकिन ये सारा ही इफेक्ट बहुत ही टॉलरेबल होता है, ये टेम्परेरी होता है, और इलाज के बाद ये सारा वेन ऑफ हो जाता है. That's such a good information, and I have also got to know that chemotherapy and radiation से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर खुदा न खास्ता आपको ये बीमारी हो भी जाती है तो जो इलाज है वो भी इतना ड्रेडफुल नहीं है कि आपको डरने की ज़रूरत है, पेनफुल नहीं है, एंड सही इलाज से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं. सो डॉक्टर, क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को फॉर ब्रेस्ट कैंसर? क्या क्या उनको अपने लाइफ में चेंजेस लाने चाहिए जिससे कि उनका रिस्क रिड्यूस हो सकता है, या अगर उनको कैंसर हो जाए तो क्या आगे चल के भी इस प्रॉब्लम से हम और रिडक्शन ले सकते हैं अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करें? We all are worried somehow or the other कि कैंसर बहुत हो रहा है आजकल. ठीक है ना, कैंसर, इसको कैंसर, उसको कैंसर, सबको कैंसर हो रहा है. लेकिन इसके कॉजेज को जानने की, इसको हम रेक्टिफिकेशन की बहुत कम सोचते हैं, और अगर सोचते हैं तो करते नहीं. We should all bring about these lifestyle changes which are in fact responsible for this sudden surge in oncology or malignancy cases. These lifestyle changes will not only benefit you as far as prevention of breast cancer is concerned, rather it will help in prevention of all the cancers in the body. हम सबको obesity कम करनी चाहिए. Tobacco is something which is worst thing you can do for your own body. Tobacco should be avoided. Alcohol should be avoided. People ask me, safe limit कितना होता है अल्कोहल का, कितना हम ले सकते हैं? Safe limit is 0. It has to be avoided, right? As far as possible, it has to be avoided. Then we should include green leafy vegetables, fresh fruits in our diet. And we Indians have a common misconception कि हम तो बहुत ज़्यादा सब्जियाँ खाते हैं, we are vegetarians, but no. The sabjis which we, or the vegetables which we cook in the kitchen they're not fresh vegetables. So we should be eating raw fruits and vegetables. We should include them in our diet. We should exercise. Somebody having a misconception that I'm not overweight, I'm not obese, why do I need to exercise? No, exercise does make a difference. It reduces your risk of having breast cancer, and for that matter any cancer for that matter. Then of course we have other factors like air pollution and all, about which we should all bring about a change as a society. As an individual, we should contribute and we should bring about the changes. So exercise, avoid alcohol, avoid tobacco, lose weight, don't be obese, be fit, eat fruits and vegetables. That's what you should do. A lot of lifestyle changes that doctor has recommended. You should stay healthy, you should avoid any kind of addiction, or maybe alcohol, tobacco. All these are bad habits which are not only going to influence cancer but also other dreaded diseases. So exercise, even if you're not obese or overweight, exercise is a good thing to start on. And after this Bright Talks, I would definitely want to hear from each one of you whether you have inculcated the healthy lifestyle routine in your life or not. And So I'm sorry to interrupt. One more very important thing which we should do.
we should follow the standard screening procedures. That is, as I have emphasized in my previous answer to questions as well, we should go for screening tests. Every woman who is more than 40 should go for a yearly mammography. And any woman who has a family history of breast cancer, who is considered as a high risk for breast cancer, they should begin this screening at a very early age, like from 30 onwards. Around 10% of breast cancer patients are very young. Very young means below 35. So this incidence is now rising. And unfortunately, when breast cancer happens in young females, it is more aggressive, and it is, it's not good. So young females also, as Dr. Divya said, nobody is safe from breast cancer. So we should be aware, and if you find anything amiss, if you find anything which is abnormal, you should definitely consult a doctor and clarify the doubts. So after the age of 30, if you have a family history, begin screening. And if you don't have any family history, after the age of 40, go for regular screening like mammogram every year. So regular screening is very important. Please keep doing that. And before we take the last question, I would request all viewers to send your questions, and we will be just taking all your questions after my last question from Dr. Abhishek Gulia, and we are discussing about breast cancer awareness. I am your host, Dr. Divya Agarwal, and we are on Bright Talks by Pachouli Aesthetics and Wellness, an initiative in public interest by Dr. Preeti Seth, founder and mentor, Pachouli Aesthetics and Wellness. And we are here to debunk all the myths associated with various medical practices. So, डॉक्टर पेशेंट्स की तो हमने बात की, पर क्या केयर गिवर्स के लिए भी कोई एडवाइस है? अगर आपकी फैमिली में किसी को डिटेक्ट हो जाता है कैंसर, तो केयर गिवर्स का क्या रोल होना चाहिए, उनके लिए क्या एडवाइस है? So I've seen in my clinical practice that, and I believe it from my heart, that cancer is not a disease of an individual. Cancer is a disease which affects the whole family. I've seen a lot going on in the family, people leaving their jobs, people leaving their studies, people to take care of the person who is inflicted with this disease. So caregivers के लिए मेरा ये मैसेज है कि पेशेंट्स की तो हम सब बात करते हैं, पेशेंट्स का वेलफेयर, पेशेंट्स का ध्यान रखना, पेशेंट्स का मेंटल वेलबींग, पेशेंट्स का फिजिकल वेलबींग, लेकिन अगर हम ध्यान रखने वालों का ही ध्यान नहीं रखेंगे, सो केयर गिवर्स का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम ध्यान रखने वाले का भी ध्यान रखें पहले, they should find time for themselves, because cancer treatment, especially breast cancer treatment, can be long. It usually spans, if we have to go for surgery, radiation and chemotherapy, it usually spans from around 5 to 6 months. उस दौरान हम केयर गिवर का भी ध्यान रखें, एंड केयर गिवर अगर ठीक होंगे तभी पेशेंट्स ठीक हो पाएंगे. So caregivers का रोल भी बहुत important है. Doctor, we have a question, and the person is asking, how can we self monitor the symptoms of breast cancer? Self monitoring के लिए क्या क्या tools हैं sir? By self monitoring, I would say I guess they're asking for about self breast examination. So as I said, regardless of the age of the female, everybody should make a point that at least once a month they'll take out just 5 minutes for themselves and examine both sides of breasts and the armpits in detail for any lumps and bumps, any lumps which might be there. It's very easy to say that you should go for self-breast examination, you should do it daily while taking a bath or something like that, but it's not very easy because we live in a very fast kind of life. We lead a very fast life. Many times the lives are so fast, we don't have even time to properly look at ourselves. We have to rush for our jobs, we have to rush for our colleges, and we have to do so many things in our lives. We tend to neglect ourselves. लेकिन what we can do is, हर महीने की फॉर एग्जांपल पहली तारीख को we'll stand in front of mirror, हम दोनों ब्रेस्ट को हम देखेंगे कि कहीं इसमें कुछ एसिमेट्री तो नहीं है, कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कहीं रिट्रैक्शन ऑफ निपल तो नहीं है, कहीं कोई कलर चेंज तो नहीं है, कहीं कोई हमें कोई उभार सा या कोई बल्ज तो नहीं दिख रहा. एंड देन वील टेक आउट टाइम एंड वील एग्जामिन ईच अदर क्वाड्रेंट, जो हमें यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें वी कैन सी कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे किया जाना चाहिए इन डिटेल.
हमें सारे ही क्वाड्रेंट्स को इन डिटेल पैल्पेट करना चाहिए अपने हाथों के फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द फिंगर्स व्हिच आर वेरी सेंसिटिव टू डिटेक्ट इवन स्मॉल लम्प्स. और अगर हमें लगता है कि कुछ तो है, then we should go to a cancer specialist or even to a general surgeon if a cancer specialist is not available and get things clarified. And we should always set reminders in our mobile phones कि हम हर साल में एक बार beyond the age of 40 अपना मैमोग्राफी ज़रूर करवाएं. अपना एक मैमोग्राफी हमें ज़रूर करवाना चाहिए. साल दर साल हम शायद ये सोचते रह जाते हैं कि हम कराएंगे लेकिन कराते ही नहीं हैं. I have known females in my family जिन्होंने शायद आज तक एक बार भी मैमोग्राफी नहीं कराया होगा despite me telling them कि आपको करवाना चाहिए. So it does make a difference. And the males whosoever are there in the audience, they should also make it a point कि अपनी females, अपनी जो family की जो females हैं, जो caregivers हैं, उनको we take them for these kind of tests because it's our responsibility as a family to take care of their health. So now I would go to next question. So doctor, the person is asking, can breastfeeding reduce the risk of breast cancer or is it just a myth? So yes, breastfeeding has a protective effect on occurring of breast cancer because what happens is breast cancer develops in females in response to the exposure of estrogen. Now every female undergoes cyclical estrogen and progesterone exposure in their lifetime. Now estrogen leads to proliferation of the glandular tissue, which can sometimes, for 6 months or 8 months or whatever period of time, like for 1 year, it stops this cyclical exposure of the female body, or rather of the breast tissue, to these kind of hormone changes. So every breastfeeding which goes on for whatever number of months or years has a protective effect on the occurrence of breast cancer. Yes. So I'm sure your question is answered by Dr. Gulia, and I think so. We have already covered this, that healthy diet definitely prevents breast cancer. We have taken this already. And can drinking alcohol increase the risk of breast cancer? Yes, Dr. Gulia has already mentioned that. Yeah, unfortunately, yes. Unfortunately, yes, and there is no safe limit as discussed by Dr. Gulia. So there's no safe limit at all. So thank you so much, doctor, and thank you for being such a lovely audience. We are grateful to you, and this is Dr. Divya Agarwal, your host, and we are on Bright Talks by Pachouli Aesthetics and Wellness, an initiative in public interest by Dr. Preeti Seth, our founder and mentor, Pachouli Aesthetics and Wellness. And we had today with us our very own eminent cancer specialist, Dr. Abhishek Gulia from Jaypee Hospital, and it was such an insightful session, and we are really grateful to you, doctor. Thank you so much. Please stay tuned. We will be coming live again on 28th of November for another episode of Bright Talks. Thank you. Namaskar.